Today, good morning everybody. I'm going to discuss about the chapter body movements. You know what is body movements? Movements of any body organ like your legs, your hands, your heads, your arms. That is the movements. Means from one part you can change the direction of your body organs. And other word is locomotion. When your whole body is changing the position from one place to other place, that is known as locomotion. Locomotion. So you must learn two words. One is uh, body movements, okay, and other is that is the locomotion. So body movements means the movement of any body organs like your heads. Inside the head there is a brain. You can give the movement of your brain, of your head. You can give the movement of your arms, your hands, your fingers, your palm, your back in any direction. Means changing the orientation, position, but not changing the place. Although it will attach to your body part, but there is a movement in any direction, either backward or forward or upside down, like that. If you will do the yoga, you will observe these things. There is a movement of your body organs just to give the flexibility of your body organs like backbone. Other word is locomotion. पर Yes. सर अभी जो आप समझा रहे थे दोबारा समझाने में मेरे को कॉल आ गया था। हाँ, body movements means movement of your body organs like your legs, like your arm, like your head, like your finger. You can give the movement in any direction, but it will not change the position from one place to other place. That is come under the movements. Means body movements means part of the body, it shows the movements, that is known as body movement. Other word is locomotion. Locomotion. Have you observed the movement of insects? You will find after 2 minutes 3 minutes insect will move from one place to other place, or you are moving in your house from kitchen to your bedroom. That is known as locomotion. What is happening in case of locomotion? Change of the place, change of the position from your kitchen house to your bedroom, from your bedroom to your reading room. So that is known as locomotion. Locomotion means whole body part is going to change the place, position from one place to other place. So in this chapter, try to know what is body movements, means movement of any body parts, and the locomotion means movement of whole organism like human body. Your body is moving from your house to market and again from your market to your house. That is known as locomotion. You can also observe the animal movements, walking of animals on the road, movement of insect on the surface, ground surface, flying of bird from one place to other place, that is known as locomotion. You will find the movement. I have given a project.
you have to do a project, you have to prepare a video clip regarding locomotion movements of different insect, bird, then animals. So you have to prepare a short video clip as a project. Means try to find the insect if it is moving, record it, and explain what type of movement, whether it is crawling, whether it is walking, whether it is flying, whether it is means running. Such type of movement you have to record. So this is the project of this chapter. Now in this chapter there is a description of the movement of different animals, insect, bird. Okay. Now this body movement regarding your body, human body. Next slide, that is the uh, next slide is joints. You know what is joints? Joining part of our body joined together with the help of bones. Joining part of our body joined together with the help of bone and cartilage. So there are two bone that will join together with a certain type of joints. So there is a classification of joints. One is ball and socket joint. Okay. And other is pivotal joint. So third is hinge joints, and fourth is fixed joint. So these are the classification of the joints, and you try to observe what are the different type of joints in our body. Try to recognize in your body where are the joints of the bones. Bones are joined by muscles as well as cartilage. So what is joints? The place where two part of our body are joined. The place where two part of our body are joints. That is with the help of cartilage. With the help of cartilage, it is going to uh, joined by cartilage. So if you see ball and socket joint, you can observe your shoulder. Means near your shoulder, the joints of your arms bone with your shoulder. This is the example of ball and socket joint. Okay. Next is other example of ball and socket joint. That is the uh, your uh, femur bones. That is the thigh bone that is joined with your hips. This is also an example of ball and socket joint. So if you see in the diagram, in this you will find the diagram. Then you will find one is socket, ball like a structure, cup like a structure, cup, socket, cup like a structure. You will find here there is a cup like a structure. Okay. And there is a ball that is fitting. This is cup like a structure, and the ball that is fitting the bone, that is the either the humerus, that is the present at the hand, hand, that is the arms, or thigh region, that is fit either shoulder or your hips. So try to observe what are the different type of joints are there. This is the example of ball and socket joint. So you will find the vertebral columns. Okay. So you will find the vertebral column, that is the joining. It is an example of pivotal joints. Whole body part attached with the vertebral columns. Your head is also attached with the vertebral columns. So this is the example of pivotal joints. And other is hinge joint. Hinge means you will find a metallic a structure that join the wall of your gate and the gate. That is hinge. Hinge means iron material that join the wall
as well as your gate in your room, in your house. So that is known as hinge. In means if you observe, give the movement of the gate of your house, it will move in certain direction, not in all direction. If you compare the ball and socket joint, you can rotate your arms in all direction in 36 360-degree direction. 360-degree direction means all direction, but you will move the body part in one plane in case of hinge joints. So generally vertebral columns, that is the pivot example of pivotal joints. But in case of hinge joints, the elbow joints and the knee joints, these are the example of the hinge joints. Means only one plane the movement of your bones or movement of your legs or your movement of your arm hands. So this is the example of the hinge joints, means knee. This is the knee joints. It come in the category of hinge joints. Knee joint come in the category of hinge joint. And that is the elbow joint. Elbow joint also come in the category of knee joints. So these are the example of hinge joint. Two examples. You have to remember minimum two examples. Okay. Now fixed joint. A fixed joint, there is no movement. You cannot give movement with the help of fixed joint. So the cranium, the skull bone, you feel fine. This is the cranium and this is the joints. So this is come in the category of fixed joint. There is no movement. Means if you observe the different type of joint with the help of ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint, you can give the movement of your body. But in case of fixed joint, the fixed joint present in the your skull, that is through which there is no movement. Generally, in the upper um, uh, mouth part, okay, so there is no movement. But I'm talking about upper jaw. There is no movement occur in upper jaw. There is no movement occur the bone of the cranium. The cranium is the name of the bone of what? The skull. So this is the example of the fixed joint. So try to know this what are the ball and socket joint. You will find this is ball like a structure and this is socket cup like a structure. This is socket cup like a structure, okay, and this is ball like a structure, okay. So this ball is going to fit in this cup, okay. Then it can rotate. It can rotate in all direction. It can rotate. This is the come in case of shoulder joint. Shoulder joint means there are two bones, means one is a scapula and one is humerus. Humerus, that is the present in your arm. Just try to observe when after completion of class, try to observe where is humerus, that is where is your arm, that is the bone, that is the longest bone of your hands. So this is humerus, that have ball shape structure that is going to fit inside the cup like structure, where that is a scapula. And that's why it can rotate in all direction. It can rotate, that bone can rotate in all direction, and due to which we can give the movement in all directions. So this is the example of ball and socket joint. Agar you can also observe hip joints. In hips you will find the femur. Femur bone is generally present in the hips, means near the your legs, means thigh bone is the femur bone, and that there is also ball like a structure. It is going to fit inside the hip joints. So that femur, you give the movement in your femur of your femur in all direction. Just I'm telling that you give the direction in 360-degree orientation in case of ball and socket joint. So you have to remember where is humerus present. Where is humerus present? Either hand or
legs. So H for humerus, H for hand. So generally hand, just for remembering I am telling. Hand means although it is the part of the arm, but for remembering, H for hand, H for humerus. Okay, so try to remember. Humerus is going to fit with a scapula, that is the example of ball and socket joint. Where is femur present? F for feet, F-double-O-T, foot, or F for femur. So femur is present in feet region, means thigh region. Generally it is present in thigh region. So try to remember where the hip is present, where the femur is present in your thigh region. So these are the example of ball and socket joint. Okay, so try to know the example of ball and socket joint and structure. Pivotal joints. Pivotal joints means that type of joints which allow forward and backward movement. I'm telling about, if you are doing the exercise, if you are doing the Surya Namaskar, you will observe these things. Key means you give the movement of your body in forward and backward direction only due to movement or your backbones. Only due to movement of your backbones. Okay. So yes, कोई पूछ रहा है कुछ? कोई पूछ रहा है? So you can ask question. अगर कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेटा. कुछ पूछना है किसी को? यस, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? सर कुछ पूछना है बेटा? यस सर हाँ, कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सर hinge joint is a pivotal joint. Pivotal joint, that is the type of joint present in case of backbone. Okay, due to that type of joint, Wrist joint. yeah, due to that type of joints. No, hinge joint is not a pivotal joint. Pivotal joint, it is the other. Sir, wrist joint is a pivotal joint. कौन सा pivotal joint? Sir, wrist. Wrist माने कमर. So yes, this is example of pivotal joints, means neck joints, joint of backbones, that is the गर्दन का जो joint है neck. जैसे आपका head जो है ना, you can rotate in up, backward, forward, sidewise. Okay, in both the side you can give the movement, attachment of your head and the backbone. Okay, so that is neck joints. Then joints of backbone, this is also example of pivotal, means try to know the movement. You can give the movement forward direction, backward direction, as well as sideway direction way movements. Means you can give the movement from the axis. You can give movement either forward, आगे तरफ भी झुक सकते हैं, बैकवर्ड पीछे तरफ भी मुड़ सकते हैं. अगर आपने किसी ने सूर्य नमस्कार किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि किस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो बैकवर्ड होगा चाहे वो फॉरवर्ड होगा. इसके अलावा क्या हो सकता है, बोथ साइड मूवमेंट्स, बोथ माने लेफ्ट साइड राइट साइड मूवमेंट. सो सच टाइप ऑफ जॉइंट, इन दिस जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग. सिलेंड्रिकल बोन होता है जो कि रिंग में रोटेट होते रहता है, इस तरह से होता है. सो दिस इज द pivotal joint. दिस इज द एग्जांपल ऑफ pivotal joint. बट नाउ hinge joint, जस्ट हाँ बोलो. सर मुझे pivotal joint समझ नहीं आया. pivotal joint में आपको जैसे रोटेशन, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका सोल्जर जॉइंट है, इसमें 360 डिग्री में रोटेशन देते हैं, लेकिन इसमें देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. क्या होता है, आगे तरफ मुड़ सकते हैं, बैकवर्ड पीछे तरफ मुड़ सकते हैं, साइड वाइज मुड़ सकते हैं, और दोनों साइड लेफ्ट साइड भी मुड़ सकते हैं. किसका मुड़ा सकते हो, आपका बॉडी को मुड़ा सकते हैं. मतलब कि आपका जो बैकबोन है, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, जब आप ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लेफ्ट साइड मुड़ते हैं ना, राइट साइड मुड़ते हैं ना. एक बार बोलते हैं राइट साइड मुड़ने के लिए, एक बार लेफ्ट साइड मुड़ने के लिए आपने स्कूल में किया होगा. इसके बाद बोलेगा आगे मुड़ने के लिए एक 1 2 3 4 काउंटिंग में. सो सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज ड्यू टू pivotal joints. मतलब there is a ring like bone and that are attached each other. Okay, and due to such type of arrangement we are able to move in forward direction, in backward direction, in sideway direction. साइड में मतलब दोनों साइड होगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड.
तो आपको दिख रहा है ना ये डायग्राम, स्लाइड दिख रहा है ना आपको? तो स्लाइड में आपको दिखेगा कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है ना? और ये होगा लेफ्ट साइड, तो ये होगा राइट साइड, ये आगे तरफ होगा फॉरवर्ड, पीछे तरफ होगा बैकवर्ड। So such type of movement is feasible only due to presence of pivotal joint. Only ये इस तरह का मूवमेंट अलाउ तब होगा जहां पे pivotal joint होगा, अदरवाइज you cannot give the movements. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब आप आगे समझेंगे हिंज ज्वाइंट। अगर आप समझना चाहते हैं तो आगे आपको पता चलेगा हिंज ज्वाइंट क्या है, ठीक है ना? तो ये हिंज ज्वाइंट, तो ट्राई टू नो हिंज ज्वाइंट। अगर आप देखिएगा, गौर से देखो, आप बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन? हाँ बोलिए। हिंज ज्वाइंट जो है, इट जॉइंट व्हिच अलाउ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंज ज्वाइंट एंड पाइवोटल ज्वाइंट? क्या डिफरेंस है हिंज ज्वाइंट में, पाइवोटल ज्वाइंट में? In case of hinge joint, only backward and forward movement occurs. Only backward and forward. समझ में आ रहा है? लेकिन in case of pivotal joint, along with backward and forward, sideway movement is allowed. यहाँ पे हम साइडवे भी मूवमेंट करते हैं in case of pivotal joint, but in case of hinge joint we do not allow, there is no allow for the movement of side movement. Means there is no sideway movement occur in case of hinge joint, but in case of hinge joint, in one plane, in one direction only there is movement. ये आप नहीं कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट जा रहा, साउथ नॉर्थ साउथ मूवमेंट दे रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते हो कि ईस्ट वेस्ट मूवमेंट देंगे आपके बॉडी का। तो ये जो है आपको, अगर इफ यू ऑब्जर्व द जॉइंट्स ऑफ द नी एंड जॉइंट्स ऑफ द एल्बो, मीन्स यू गिव द मूवमेंट इन सर्टेन डायरेक्शन। ये नहीं कि आप राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, ऐसा मूवमेंट नहीं होगा। जबरदस्ती करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो अलाउ है द मूवमेंट दैट परमिसेबल, दैट इज ओनली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अगर आपने फोर्सफुली किया तो जर्क भी हो सकता है बोन में। सो हिंज ज्वाइंट इज अ ज्वाइंट व्हिच अलाउ बैकवर्ड एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट लाइक अ हिंज। हिंज मतलब कि एक आयरन का स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों को जोड़ता है, किसको? वॉल ऑफ योर हाउस दैट इज प्रेजेंट ऑन द गेट एंड द दैट इज द योर डोर, दरवाजे को, जिससे कि मूवमेंट होता है इन वन डायरेक्शन। आप मूवमेंट देख के देखना कि डायरेक्शन में जो आपका जो गेट है उसका मूवमेंट कैसे होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। अगर हम चाहेंगे ऊपर तरफ ले जाना तो ले जाएंगे, आपके अपने गेट को नहीं ले जा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट, मींस अलाउ द मूवमेंट ओनली बैकवर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट लाइक हिंज। ओके, समझ में आया सबको हिंज ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट समझ में आया? यस या नो? यस। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये आप देखोगे, ये जो नी में है, घुटने में, ये है एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। ओके, so you will find the there is a cartilage, okay, there is a femur, and you will find patella. Okay, so these are, you have to remember, ये humerus है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ह्यूमरस जो है, जो बोन है, कहाँ होता है? ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट वेयर? कहाँ होता है ह्यूमरस बोन? ह्यूमरस बोन H4, H4 क्या होता है? हॉर्स। H4 हैंड, HAND हैंड। तो ह्यूमरस बोन किस में होगा? सर हैंड। हैंड में होगा। F4, F4, F4 क्या होता है? फुट। FOOT, फुट माने क्या होता है? फुट माने पैर होता है, पैर होता है ना? तो यू विल फाइंड ह्यूमरस, you will find humerus, yes, humerus is present in case of your arm. Arm bone is known as humerus, आपको याद रखने के लिए। हाँ,
आपको याद रखने के लिए याद रखना है H4 हैंड, H4 ह्यूमरस, ओके। उसी तरह से F for feet, F for femur. So femur is present in the legs where the thigh region, and humerus is present in your hand in the arm region. आर्म समझते हैं ना आप लोग? सब लोग को बॉडी पार्ट याद रखना है, क्लास 1 में सिखाया होगा व्हाट आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट, ओके। So you will find the bone, the longest bone of your hands and the legs. Longest bone of hands is humerus, and longest bone of the feet, your feet is femur. So femur is the longest bone of whole of the body. Femur is the longest bone of whole of your body. एग्जाम्पल ये याद रखना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको कुछ में पूछा जाएगा, फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द होल ऑफ योर बॉडी। कितना बोन होता है आपके बॉडी में? नंबर ऑफ बोन कितना होता है? Sir, 206. Very good, 206. All are brilliant minded. So try to know. Yes. So try to know. अब ये पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन कि ह्यूमरस जो बोन है वो किस दो डिफरेंट जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट से जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस कौन कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट से जुड़ा हुआ है ह्यूमरस? एक तो जुड़ा हुआ है, हाँ बोलो, ह्यूमरस जो है कौन कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट से जुड़ा हुआ है? Sir, टाइप ऑफ जॉइंट बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा बोल रहा हूँ हिंज जॉइंट, तीसरा बोल रहा हूँ पाइवोटल, हाँ बोलो पाइवोटल sir, जॉइंट, हिंज जॉइंट, वेरी गुड। और दूसरा जॉइंट किस टाइप से जुड़ा हुआ है? और दूसरा कौन सा जॉइंट से जुड़ा हुआ है टाइप ऑफ जॉइंट में? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे जुड़ा हुआ है? कंधे पर, शोल्डर पे, ठीक है ना। बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे है? कंधे पे है और हिप्स में है। और Yes. कहाँ पे है? हिंज जॉइंट, एल्बो, ELBOW, एल्बो एंड नी। वो जो knee joint. Yes. So knee and elbow, there is a presence of hinge joint. Okay. So hinge joint generally present in knee and elbow, and ball and socket joint present on shoulder and your hips. So you must remember. अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, व्हाट आर टू टाइप ऑफ जॉइंट अटैच विथ इट? कौन सा जॉइंट अटैच है फ्यूमर से? बोलो, फ्यूमर से कौन कौन सा जॉइंट अटैच है? Sir, hinge joint and ball socket joint. तो सब लोग नहीं बोल रहा है, तुम्हारे जानने से सबको कहाँ पता चला? सबको पता चला? यस बोलो, ऑल यू से यस, yes. In arm, you will find the femur is the longest bone. Which bone is the longest in your body? Which bone is longest in your body? Humor. Which bone is longest in your hand? होल हैंड में कौन सा बोन सबसे बड़ा है? हैंड की बात कर रहा हूँ, हैंड, H for hand, H for Sir, humor. बोन का नाम पूछ रहा हूँ ना, जॉइंट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, बोन का नाम पूछ रहा हूँ। So you try to know this is the Sir, question. radius. Yes, try to know the humerus bone, and you will find also radius and ulna. Radius bone is the thicker bone in your hand after after arm. आर्म के बाद जो है ना, हैंड में दो बोन होता है, जब आप जहां से खाते हो वो है पाम, फिंगर और पाम, उसके ऊपर जो बोन है उसमें दो टाइप का बोन है, एक है रेडियस, एक है अल्ना। तो रेडियस इज द थिकर बोन एंड अल्ना इज द थिनर बोन, ठीक है ना। उसी तरह से आपके लेग्स में भी होता है, देखो यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में दिया हुआ है टिबिया, जो आपका जो नीचे में आफ्टर नी एंड बिफोर योर लेग्स, दे ये बोन, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये है टिबिया, ये है फिबुला, ये टिबिया है और ये फेबुला है। सो दे आर सिमिलर। रेडियस जो है इसका कॉरिस्पॉन्डिंग है हैंड में, ठीक है ना, और फिबुला जो है इसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है हैंड में? अल्ना। सो ट्राई टू कोरिलेट दे आर टू टाइप ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन योर हैंड। हैंड में जो है आफ्टर नी the two bones are present, one is radius, one is ulna, and after elbow के बाद,
एल्बो के बाद आपको दो बोन मिलता है, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना, और नी के बाद दो बोन होता है टिबिया एंड फेबुला, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट इज please off your mic, please off your mic. So fixed joints. Next category, the last category is fixed joints. Fixed joint is a joint in which bone are fixed and cannot move. There is no movement at all. The nothing, zero movement occur in case of fixed joint. Where is fixed joint present? You have to remember the examples. Minimum 2 example of each type of joints. Joints in the skull. Joints in the skull. Joints in the upper jaw. Upper jaw कहाँ होगा? देखो यहाँ पे मैग्जिला जहाँ लिखा हुआ है वो अपर जॉ होता है। देखो मैग्जिला जहाँ लिखा हुआ है वो अपर जॉ। देखो स्लाइड में जहाँ पे एरो दिख रहा है आपको? तुम लोग का जो यहाँ नाम लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट का नाम, वहां पे मैग्जिला लिखा हुआ है नीचे में, दिख रहा है मैग्जिला, that is the upper jaw. This is the example of upper jaw. Okay, and lower jaw you can give the movement. Mandible में आप movement दे सकते हैं. there is a movement during eating, during speaking, there is a movement in the bone. So you will find the type of movements. Okay, so there are different type of movement. आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ ये मूवमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये जो मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है आपको दिख रहा है। मैंडिबल में मूवमेंट होता है, देयर इज नो मूवमेंट अकर इन मैक्सिला। नेसल बोन देयर इज नो मूवमेंट, टेम्पोरल बोन देयर इज नो मूवमेंट, फ्रंटल बोन। सो पैराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन, आपका जो हेड है उसका सामने वाला जो बोन है दैट इज फ्रंटल बोन, और जो पीछे वाला जो बोन है आपके हेड में उसको बोलता है पैराइटल बोन। अब पीछे के जस्ट नीचे में जो बोन है ओसिपिटल बोन, or you will find near the your eye there is a zygomatic bone. Okay, and you will find the bone that is present in the mandible in lower jaw, jaw, and you will find also the bone. So all these bone are joined together in the category of fixed joints. So you have to remember the type of joints, that is fixed joint, there is no movement, it is always fixed and cannot move. So you have to remember what is the example of ball and socket joints. Ball and socket joint का example क्या होगा? आपके शोल्डर में होगा, आपके हिप्स में होगा, हिप्स joints and shoulder joints. Then other pivotal joints का example क्या होगा? The joint neck joints. Okay, that is the example of pivotal joint. And joint of vertebral column in your vertebral column, that is the example of, that is the pivotal joint. Third is hinge joint. Example of hinge joint is, hinge joint का example क्या है, कोई बताएगा? आर्म। hinge joint का example क्या है? elbow है, elbow and नी मतलब घुटना होता है, घुटना जानते हो ना? ये जो घुटना है ना जहां से बैठते हो तुम लोग अपने बेड पे, तो वो जो मुड़ता है ना जहां से बोन, वो दैट इज नी मींस घुटना, और जहां से आप अपने हैंड को मोड़ते हैं उसको कहते हैं एल्बो। एल्बो मींस केहूनी। ओके, so there are two type of joint you have to remember in case of hinge joints. Now in case of fixed joint you have to remember the joints of the different bones of the skull. That is the example of fixed joints. So this is the fixed joint. And upper jaw joints, upper jaw bones, that is the example of fixed joint. Means upper jaw joint with the your skull, that is the example of fixed joint. There is no movement occur, only lower portion. When you are speaking, when you are eating, upper jaw is not going to move, only lower jaw is going to move. That is the example of fixed joint. So try to remember each and every. Now come to a skeleton. What is a skeleton? The bone framework. The bones of our body form a framework which give shape to our body. The bones of our body forms a framework. Framework means a structure of your body, and it holds whole body parts. It holds whole body parts. So bone of our body form the framework which gives the shape to the body. Means what
appearance it will look like, what texture it will look like, that is decided by the skeleton. This skeleton of bone is called, the framework of the bone is called a skeleton. So what are different part of a skeleton? One is on the top position, it is head, that is a skull. Inside the skull, what is there? Inside the skull, what is there? That is brain. That is the soft part of your body, that is brain, that is protected by a skull bone. And the you will find the backbone, that is this is the vertebral column from neck region to the top hips region. They are joined together by vertebral column, that is backbone. Next is shoulder bone. You will find the shoulder bone here, okay, कंधा वाला, ठीक है ना आपको, शोल्डर क्लेविकल, ठीक है ना, क्लेविकल. नेक्स्ट इज रिब्स केज. So there are 12 pairs of ribs that protect your lungs and heart. 12 pair of ribs protect your heart and your lungs. That is the soft organs protected by this 12 pair of ribs. Then pelvic bone. Pelvic bone generally present in your hips region. This is the pelvic bone that is present in your hips region. And the bone of your hands and legs. I have already discussed the hands. This is the hands and this is the heads. So if you remember humerus, it is corresponding to that is present H for hand, H for humerus. तो क्या होता है? Where is humerus present? कहाँ होता है humerus present? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा कोई? Anyone can answer? Where is humerus present? Humerus Sir, is hand. Sir, hand. hand. तो कैसे याद रखोगे? H for humerus, H for hand. Okay. Next, Yes, the corresponding humerus in case of legs. What is the name of the bone? फ्यूमर. फ्यूमर जो है हैंड में जो ह्यूमरस है उसी तरह से फ्यूमर जो है बोन लेग्स में होता है. सो एफ फॉर फुट, एफ फॉर फ्यूमर होता है ना. तो कैसे याद रखेंगे? एफ फॉर फुट, एफ फॉर फ्यूमर. सो इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी. इट इज द longest bone of your body. Out of 206 bone, this is the longest bone of your body, that is femur. That is the reason where it is present in the thigh region. The bone is present in the thigh region. And humerus bone is present in your arm region where biceps and triceps are there. Okay, biceps bone and triceps muscles are there. On the upper hand you will find the biceps muscles and on the lower side you will find triceps. So bone provide the platform for attachment of muscles. So if you prepare the muscles after putting the exercise, continuous exercise, then there is a development of muscle on the bone only, no other part support the muscle. Next is in your hand there is a bone, other bone, that is radius and ulna. First is radius and one is ulna. After elbow, after elbow you will find two bone. Just दिख रहा है आप सभी को? One is radius, जो thicker bone है, that is radius, and जो thinner bone है उसको कहेंगे ulna. So corresponding the bone in case of the feet, यहाँ से यहाँ तक दो बोन है. एक है टिबिया, इसका नाम है टिबिया जो थिकर बोन है, और जो थिनर बोन है उसको कहेंगे फिबुला. थिनर बोन क्या है? फिबुला. उसका करिस्पॉन्डिंग है. जैसे आपका हैंड्स में आफ्टर एल्बो रेडियस है, ये थिकर बोन, तो यहाँ पे क्या है? टिबिया है, थिकर बोन इन केस ऑफ फीट. सिमिलरली ulna thinner bone है, also thinner bone in the your feet, that is fibula. So type of bone you have to remember what are the type of bone where it is present, and you will find the ribs. What is the number of ribs? 12 pair of ribs. कितना होता है? 12 pairs. 12 pairs. 12 pairs. Out of 12 pair, 3 pair of ribs is floating ribs. 3 pairs of ribs are floating ribs, जो कि फ्लोट करते रहता है, जो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है. और जो आपका चेस्ट का जो बोन है उसको कहते हैं एस्टर्नम. एस्टर्नम, चेस्ट के बोन को क्या बोलते हैं? एस्टर्नम. Yes. So try to remember. I will share this this PPT.
materials in your groups, and try to remember what are the bones present, what is the total number of bone present, 206, 206. what is the longest bone, that is the femur, that is present in the thigh region, and the hardest substance of your body, enamel, that is the teeth. Enamel, not a skull, enamel. Enamel is the hardest substance of your body. Enamel is the hardest substance your body. Okay, so just try to know. I have discussed the uh, I have discussed recently the skeleton. It is the हो गया टाइम बोलो तो मैं ये कर रहा हूँ कि यस सो ट्राई टू नो हाँ मैं ये कर रहा हूँ कि हेलो हेलो सर। हाँ हाँ आप सभी को मैं कह रहा हूँ बेटा आप सभी को कह रहा हूँ कि आपको कल जो है 8:45 में आप सभी को मिलेगा क्या लिंक मिलेगा जस्ट फॉर प्लेइंग द क्विज क्विज कौन सा है स्पोर्ट्स क्विज तो अब मैंने मटेरियल भेजा है उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ठीक है बेटा अच्छे से मटेरियल हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ओके सर।